About what, guys? We are going to learn about the call by value and call by reference. Again, this is very important as point of the interview. People are going to ask you the question on the what people are going to ask you the question. They are going to ask you what is mean by the call by value and call by reference. चलो देखते हैं, guys, पढ़ते हैं. क्लियर है सभी को? फाइनल कीवर्ड के बारे में क्लियर है? ये सर फाइनल क्लास क्या होता है? ये यूज नहीं है इसका. फाइनल क्लास, इफ यू आर डिक्लेयरिंग आवर क्लास एज ए फाइनल, उस क्लास को हम एक्सटेंड नहीं कर सकते. अच्छा, ठीक इन्हें. है? ओके. Is a relationship we are not able to create. Now let me quickly talk about the call by value and call by reference. Okay, so let me create the class over here, call by value example. Okay, अब listen carefully, guys, what exactly it means. What is meant by the call by value? सबसे पहले वो पढ़ लेते हैं कि call by value होता क्या है. If we call a method passing a value, it is known as a call by value. बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कोई कोई टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं. अगर मैं कभी भी कोई वैल्यू कॉल करता हूं, अगर मैं कभी भी कोई वैल्यू कॉल करता हूं, अगर मैं कभी भी कोई मेथड कॉल करता हूं बाय पासिंग एन वैल्यू, वैल्यू पास करके मैं उसको कॉल करता हूं, उसी को हम क्या कहते हैं? व्हाट वी आर गोइंग टू कॉल इट? वी आर गोइंग टू कॉल इट एज एन कॉल बाय वैल्यू. इफ वी कॉल अ मेथड passing a value, it is known as an call by value. The changes being done in the call by method is not affected in a calling method. तो कॉल बाय वैल्यू का मतलब क्या होता है कि जहां जहां पे हमने कॉल दिया है वहीं पे चेंजेस आर रिफ्लेक्टेड, जहां से हमने कॉल दिया है वहां पे कोई भी चेंजेस नहीं रिफ्लेक्टेड होता है. सर व्हाट डज इट मीन? वी डोंट अंडरस्टैंड. लेट मी क्विकली शो यू द एग्जांपल. यू कैन सी, गाइस, वी हैव अ वेरिएबल हियर. व्हाट वी विल हैव? वी हैव अ वेरिएबल लाइक इंटीजर डेटा. ये एक वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया. इंटीजर डेटा इज इक्वल टू 50. ये वेरिएबल की वैल्यू हमने डिक्लेयर की. अब मैं क्या करो, यहाँ पे एक मेथड क्रिएट करो, पब्लिक वॉइड, पब्लिक वॉइड टेस्ट करके ये मेथड मैंने डिक्लेयर कर दी. और यहाँ पे क्या किया गाइस? यहाँ पे भी आई एम जस्ट यूजिंग इंटीजर डेटा वेरिएबल आई एम यूज. ओके, वन दिस इज डन, डेटा इज इक्वल टू डेटा प्लस 500, ये मैंने वैल्यू बेसिकली ऐड कर दी. ओके, एंड वन दिस इज डन, अब मैं क्या कर रहा हूँ? इस मेथड को कॉल कर रहा हूँ. तो कॉल कैसे करेंगे? कॉल बाय वैल्यू. ओके, इसको ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे. वी हैव टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, एंड वन दिस इज डन, what we have to use, guys, call by value dot test basically we have to call. And you can see, guys, we have to pass the value here. हमने क्या किया? यहाँ पे वैल्यू पास कर दिया. So what is the thing over here? तो call by value, it means whenever we are calling the particular method, whenever we are calling the particular method with an passing and parameter, this is known as an call by value. तो call by values के जो changes होते हैं, changes are reflected where, guys? Here only. जहां पे कॉल दिया है वहीं पे चेंजेस आर रिफ्लेक्टेड, जहां से कॉल दिया है वहां पे कोई भी चेंजेस आर नॉट रिफ्लेक्टेड. जहां से कॉल दिया है वहां पे कोई भी चेंजेस आर नॉट रिफ्लेक्टेड. प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस पॉइंट. क्लियर ऑल दिस पॉइंट, गाइस? सबको क्लियर है? व्हाट डू यू थिंक? क्लियर दिस पॉइंट, गाइस? एवरीवन, आर यू विथ मी, गाइस? Come on, Yes, tell sir. me. यस. Okay, तो यहाँ पे यू कैन सी, इफ आई एम गोइंग टू रन माई प्रोग्राम, व्हाट आउटपुट यू विल गेट, गाइस? यू कैन सी क्या आउटपुट मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि हमने कुछ प्रिंट नहीं किया है. तो चलो गाइस, प्रिंट करते हैं. तो हम क्या करेंगे? बिफोर कॉलिंग दिस वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करेंगे, डेटा वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करेंगे, और आफ्टर कॉलिंग भी प्रिंट करेंगे. तो यू कैन सी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन बिफोर call. Okay, before call, and what we have to use plus data variable. Basically हमने क्या किया? Call by value dot data को print किया. And once we are done with an calling, then हम क्या करेंगे, guys? After call we are going to call after. So you can see, guys, before call and after call आपकी जो वेरिएबल्स की वैल्यू है, डेटा वेरिएबल्स की वैल्यू शुड बी सेम ईयर. तो जहां से कॉल दिया, यहां से कॉल दिया है ना गाइस हमें, तो यहाँ पे कोई भी चेंजेस आर नॉट रिफ्लेक्टिंग. जहां पे कॉल दिया है वहीं पे योर चेंजेस आर रिफ्लेक्टिंग. यू कैन सी, गाइस, बिफोर कॉल एंड आफ्टर क्लास, आफ्टर कॉल, दोनों की जो इंस्टेंस वेरिएबल मतलब डेटा वेरिएबल की जो वैल्यू है वो सेम ही है. क्लियर एवरीवन? दिस पॉइंट इज क्लियर. वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंग वी हैव. एग्री एवरीवन? कॉल बाय वैल्यू क्लियर है सभी को? एवरीवन, आर यू विथ मी, गाइस? सर एक बार और एक्सप्लेन करना समझ नहीं आया.
कॉल बाय वैल्यू इट मीन्स जब जब हम कभी भी कोई मेथड को कॉल करते हैं बाय पासिंग द बाय पासिंग द पैरामीटर, इसी को हम कॉल बाय वैल्यू कहते हैं। कॉल बाय वैल्यू का रूल क्या होता है, जहां पे हमने कॉल दिया, यहाँ पे कॉल दिया है ना, तो चेंजेस आर रिफ्लेक्टेड हियर ओनली। अगर मैं यहाँ पे डेटा वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करता हूँ तो व्हाट वैल्यू यू विल गेट गाइस, 600 वैल्यू यू विल गेट। बट जहां से हमने कॉल दिया, लाइक यहां से हमने कॉल दिया है ना, यहाँ पे कोई भी चेंजेस आर नॉट रिफ्लेक्टेड, यहाँ पे कोई भी चेंजेस आर नॉट रिफ्लेक्टेड। क्लियर नाउ एवरीवन, यस सर। अंडरस्टूड? ओके, यू कैन सी अगर मैं यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट करता हूँ, डेटा वेरिएबल को प्रिंट करता हूँ, तो यहाँ पे सिर्फ 600 आउटपुट यहाँ पे मिल जाएगा, बट यहाँ पे आपके जो चीजें है वो रिमेन सेम रहेगी। यहाँ पे जो है आपकी चीजें जो होती है, डेटा, ये जो ग्लोबल वेरिएबल है, इसको हम प्रिंट करें ना, इसकी वैल्यू स्टिल सेम गाइस। क्लियर एवरीवन, दिस पॉइंट इज क्लियर? यस सर। Okay, so this is the thing basically I want to tell you. This is known as an call by value basically. We are clear, guys. I want a response from everyone. Are you with me, guys? यस Clear? Yes, sir. Okay, great. Yes. Once we Yeah, are yeah, done yes, with sir. this thing, यहाँ पे देखो, यहाँ पे clearly mention किया है, in a call by value the modification done to the parameter pass does not reflected in a caller scope. जहां से हमने कॉलर स्कोप में कॉल दिया वहां पे कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं होता है। दिस इज नोन एज एन कॉल बाय रेफरेंस बेसिक, कॉल बाय वैल्यू बेसिकली। When this is done, अब हम मूव करने वाले, वेयर वी हैव टू मूव गाइस, वी हैव टू मूव टू दी कॉल बाय रेफरेंस। अब कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है, चलो वो समझ लेते हैं। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग वी हैव। कॉल बाय रेफरेंस इट मींस गाइस, whenever we are calling method with passing a object, whenever we are calling a method with passing a what guys, object or reference variable, that thing known as an call by reference, उसी को हम क्या कहते हैं, व्हाट वी आर गोइंग टू कॉल इट, वी आर गोइंग टू कॉल इट एज एन कॉल बाय रेफरेंस। सर डू यू हैव एनी प्रूफ फॉर इट? द आंसर इज यस गाइस। चलो देखते हैं कॉल बाय रेफरेंस का एग्जांपल देखते हैं। लेट मी क्रिएट एन कॉल बाय रेफरेंस। ओके, तो यहाँ पे आई एम गोइंग टू डिफाइन इंटीजर डेटा, ये जो वेरिएबल है आई एम जस्ट डिक्लेयरिंग ओवर हियर पब्लिक, पब्लिक वॉइड सेम मेथड आई एम जस्ट पिकिंग अप टेस्ट। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इंस्टेड ऑफ वेरिएबल मैं डायरेक्टली ऑब्जेक्ट को यहाँ पे पास करूँ, किसका, क्लास का ऑब्जेक्ट यहाँ पे मैं पास कर रहा हूँ। एंड वन दिस इज डन, क्लास ऑब्जेक्ट डॉट डेटा इज इक्वल टू क्लास ऑब्जेक्ट reference dot data is equal to what guys, 500 I'm just passing guys, same thing I'm just passing it. Okay, once we are done with this thing, then what is the next thing we'll have guys? अब मैं क्या करूंगा, इस क्लास का क्या करूंगा, ऑब्जेक्ट आई हैव टू कॉल। कैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, सिंपल वे से वी हैव टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। ओके, वंस दिस इज डन, अब हम क्या करेंगे, वी हैव टू कॉल द मेथड। कैसे कॉल करेंगे, सबसे पहले सिस्टम डॉट डॉट प्रिंटलन बिफोर calling, okay, and I am just passing what I am calling guys, हमारा जो वेरिएबल है वो वेरिएबल मैं कॉल करूंगा। ओके, और जैसे मैं मेथड कॉल करूंगा, विच मेथड गाइस, ये जो टेस्ट वाली मेथड है ये कॉल करूंगा। यहाँ पे कॉल बाय रेफरेंस आई एम जस्ट पासिंग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और नहीं तो सीधा इसी को प्रिंट आउट कर देता हूँ। और यहाँ पे आफ्टर कॉलिंग आई एम जस्ट यूजिंग। अब what is the next thing guys, चलो देखते हैं the important thing we are going to learn. What important thing we are going to learn guys, we are going to learn about the important thing. What important thing about the call by reference? While call by reference means calling a method with a parameter as a reference, calling a method with parameter as a reference. Through this the argument referred is passed to the parameter. हम क्या करेंगे, object basically we have to pass this. Please make a note of this point. Once we are done with this thing, if we pass an object in place of the any primitive value, अगर हम कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट पास करते इन ओके इन प्लेस ऑफ द एनी प्रिमिटिव वैल्यू, उसी को हम क्या कहते हैं, व्हाट वी आर गोइंग टू कॉल इट, उसी को हम कॉल बाय रेफरेंस कहते हैं। इफ यू पास ऑब्जेक्ट इन प्लेस ऑफ द एनी प्रिमिटिव वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू विल बी चेंज हियर। ओरिजिनल वैल्यू मतलब आपकी डेटा वेरिएबल की जो इंस्टेंस वेरिएबल वैल्यू उसकी चेंज हो जाएंगी। मतलब कहाँ पे चेंज होगी, जहां पे कॉल दिया है वहां पे तो चेंजेस होंगे होंगे, जहां पे कॉल दिया है यहां पे चेंजेस तो होंगे होंगे, जहां से कॉल दिया है वहां पे भी योर चेंजेस आर गोइंग टू रिफ्लेक्ट।
जहां पे कॉल दिया है वहां पे भी योर चेंजेस आर गोइंग टू रिफ्लेक्ट गाइस. प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस पॉइंट. Clear this point, guys? Everyone understood this point, guys? Everyone, guys, clear? So let me rerun this program. Let me show you the example. If I'm going to run my program, you can see, guys, जहां पे कॉल दिया है यहाँ पे तो चेंजेस आर रिफ्लेक्टिंग. ओके, जहां से कॉल दिया है यहाँ पे भी चेंजेस आर रिफ्लेक्टिंग. यू कैन सी बिफोर कॉल. लेट मी क्विकली डिफाइन सम मेथड हियर. वहां पे कितना 50 डिफाइन किया था ना गाइस. तो बिफोर कॉल हाउ व्हाट आउटपुट यू विल गेट 50 कॉल 50 आउटपुट यू विल गेट. बट आफ्टर कॉल भी इसके चेंजेस आर रिफ्लेक्टेड ओवर हियर एंड यू विल गेट सम वैल्यूज गाइस. व्हाट आर वैल्यू यू विल गेट? यू विल गेट 550 वैल्यू यू विल गेट. तो जहां से कॉल दिया है वहां पे भी योर चेंजेस आर रिफ्लेक्टेड इफ यू आर पासिंग ऑब्जेक्ट एज अ पैरामीटर. Clear, Uh, everyone? can you and please explain the line number 7 that is about the method? Okay, so what method is this? This is a normal method we have, and this method passing an object of the class. So what I did, object name dot variable name is equal to object name dot variable name plus 500. It means addition I'm performing, and whatever output you will get, I'm storing the addition here. So what is the value of data? 50. 50 plus 500. What output you will get? 550. So this is 550 output is going to store here. So we can Understood? define the method like this with the class name as well as the object in the same. That is a similar like Yes, line. yes, yes, Okay, okay, yes, yes. This got is known as a call by reference we have. okay, got it. Thank you. Okay, great. What are the people? इसका किसी कोई यूजेस कोई क्या है? Sorry, कहाँ हम लोग यूज करते हैं कॉल बाय रेफरेंस? sorry. Why do we actually use this call by reference? No, I don't understand. Come again. What did you say? I'm saying कि ये जो कॉल बाय रेफरेंस है ये नॉर्मली हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं? कॉल बाय रेफरेंस जो होते हैं वो नॉर्मली कहाँ पे यूज करते हैं? अब कॉल बाय रेफरेंस इज नथिंग बट जब जब हमें कभी भी ऑब्जेक्ट पास करना होता है दैट टाइम वी हैव टू यूज. तो ये हम कलेक्शंस में ज्यादातर की यूज करते हैं. तब हम क्या करते हैं? कलेक्शन में हम ज्यादातर की यूज करते हैं. क्लियर? Yes. What are other people? किसी को है कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन, डिफिकल्टीज गाइस? No, sir. No, sir. No one? All right. Okay. All right. So this is the thing basically I want to tell you guys, which is very, very important. This is the thing basically I want to tell you, which is very, very important. So does anyone has any question, any query, any doubt, any difficulties? No one? So this is known as what is call by value and call by reference. Please make a note of this point. And this is an what guys? This is an end of our call by value and call by reference.